construct an angle of 45 degree at initial point of construction and justify the construction. So last video you have seen how to make an angle of 90 degree and prove it also. With the help of geometry box we have constructed 90 degree, and then with the help of geometry we have proved that it is equal to 90 degree. Now here also with the help of geometry box we have to prove that it is equal to 45 degree. We have to construct 45 degree rather, and we have to justify our proof. So let us see how we can do that. उसको कैसे करते हैं? You draw a straight line here. Let us construct here AB and say let us construct AB here and let us make an angle of 45 degree at an initial point A. A के ऊपर हम 45 डिग्री हमें बनाना है. तो व्हाट टू डू विथ सुटेबल रेडियस. सुटेबल रेडियस लेकर आप क्या कीजिए, यहाँ से आप एंगल बनाते चले जाइए. सो सी हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर इज हियर दिस आई विल टेक इट लाइक दिस. आई एम suitable radius, not necessary a fixed radius is not necessary. Suitable radius I have taken, and with the same radius, don't change the radius once you have drawn this arc. Then let us mark again two arcs. I'll mark it here. This one arc, and this another arc I'll mark it. So let me repeat again. क्या किया मैंने, A को सेंटर लेकर मैंने यहाँ पर एक ये आर्क बनाया, फिर यहाँ से एक आर्क बना रहा हूँ, यहाँ से एक आर्क बना रहा हूँ. इसको आप चाहिए तो इसको आप कहिएगा P, इसको आप कहिए Q, और इसको आप चाहो तो कहिएगा R. अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू मेक 90 डिग्री. तो अगर आप चाहते हो तो सेम मार्क लीजिए, नहीं चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो. इट्स लेफ्ट टू यू. तो अगर नाउ इफ यू चेंज इट देन आई एम जस्ट पुटिंग एन आर्क हियर. नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन दिस पॉइंट, आई विल जॉइन दिस पॉइंट. नाउ यू विल से सर दिस इज 90 डिग्री. आई नो दैट चिल्ड्रन, मैं जानता हूँ ये 90 डिग्री है. सर आपको तो 45 बनाने के लिए कहा है. यस, मैं क्या करूँगा, इसको बाइसेक्ट करूँगा. इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर उसको बाइसेक्ट करेंगे. तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, अगेन आई टोल्ड यू, फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स विथ सुटेबल रेडियस आप दो आर्क सेलेक्ट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई चोजन दिस, then this one I'll take it here, this I'll draw here, and from here I'll draw another arc. So I hope you understood. First you have to construct 90 degree. After constructing 90 degree, from these 2 points you have to bisect 90 degree. Rather what I'll say is you have to bisect 90 degree. So what I'm going to do here is I'm going to bisect this 90 degree. This point I'll bisect here. So what will happen here is I can say that this angle, the name I should give some angle name to this angle. So what I'll do, say here this is D, say here this is D. So what I can say is this angle DAB is equal to 45 degree. Angle DAB is equal to 45 degree. That's all. Angle DAB is equal to 45 degree. Next is you have to justify it. Sir, how to justify it? I'll just come to the point. See here, for the sake of justification, what I'll do is I'll join these two lines. I'll join it here. Suppose if I join this one, I'll join this point. I'll call it as, say, PQ is already, R is also there. So I'll say this is yes, and this one I'll join it here. This one I'll join it. इसको मैं join कर रहा हूँ. कौन सा join किया बच्चों मैंने, देखिए PS को join किया और yes I'll give some name here. इसको एक नाम देंगे, चलो yes M I'll take it here. इसको हम yes M कहेंगे. Now let us see how they are congruent. See here, in triangle MAS, in triangle MAS PAS, you will agree with me if I say that these two are equal, because हमने यहाँ से same arc लिया था.
Agree with me if I say that MA equal to AP, because you see here what I am doing here is we take like this, we have taken these 2 points and this point is here कर रहा हूँ, तो कैसे जस्टिफाई करोगे आप? इन ट्रायंगल MAS, कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया? इन ट्रायंगल MAS एंड ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PAS, in triangle MAS and triangle PAS, see here AM equal to AP, AM equal to AP, because radii have the same arc, AM equal to AP. This is my first proof, because they are, if I join it, it becomes an equilateral triangle here. See, this point and this point are equal, so AM equal to AP. The first point is here. Second point is, see here, from here only we have drawn these 2 arcs, so SP equal to MS, so SP equal to MS. This is all from construction actually, this is all by construction only we have done it, or while construction only we have proved it actually. And you see here, side AS is common to both, so AS equal to AS, so this I will call it as third equation. So finally what I am getting is, from equation 1, 2, 3, from equation 1, 2 and 3, what I am getting children here is, what I am getting here is triangle PAS, triangle PAS is equal to triangle AMS, triangle PAS is congruent to triangle PAS is congruent to triangle AMS by SSS congruency, यानी 3 sides of this triangle is equal to 3 sides of this triangle. So what I'll say is they are congruent by SSS congruency rule, SSS congruency rule. So what will happen is, this angle PAS and this angle MAS will be equal, so that is 45 degree. This complete angle is 90, and if these 2 angles become equal by CPCT, then this angle will be equal to how much? 45 degree. 45 degree और ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक साइड कॉमन है, यानी ये पूरा 90 डिग्री का आधा आधा कितना होगा? 45 होगा. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एंगल MAS इक्वल टू एंगल PAS equal to half of 90 and that's equal to 45 degree, hence proved. That is the justification. So ये justification आपको करना है, simple justification है बच्चों. What is this? ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है. टोटल एंगल है 90 और 90 का आधा कितना होता है? 45. दैट्स ऑल.